हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज तुम फोर्थ सेमिस्टर एग्जाम सरी जाइए। फिफ्थ सेमिस्टर रे कौन कौन सब कोर्स पढ़ो, को पेपर रही, कोर पेपर सब कौन रही, चलो आज देखा। तेणु तुम 8, 9, 10 पेपर तुम फोर्थ सेमिस्टर पढ़ी। तेणु आमर कोर पेपर रही 11, 12 और डीएससी 1 और डीएससी 2 पेपर। कोर पेपर हूँ 11, 12 और डीएससी पेपर डीएससी 1, 2। तेणु चलो देखा कौन कौन सब आमर यूनिट रही, कौन कौन सब टॉपिक रही। तेणु वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर सांग मानक सेयार कर। चलो ताले आज वीडियो स्टार्ट करवा। तेणु नुआ पाठ तुम मैंने पढ़, कौन कौन सब पढ़, तुम मन भर बहुत इगरनेस रही। तेणु चलो जाना जे कौन कौन सब टॉपिक रही, कोर पेपर सब कौन रही। तेणु प्रथम हूँ आमर कोर 11 पेपर पढ़ा। ता ना हूँ कौन ना डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन ओडिशा। कोर 8 रे पढ़ी जे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तेणु कोर 11 पेपर हूँ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन ओडिशा। से आम कौन कौन पढ़ा यूनिट गुड़ाक देखा पे कौन कौन सब रही ना। यूनिट 1 रही स्टाटस ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। तादर अच्छे हिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन ओडिशा, इफर्ट्स टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंटरी एजुकेशन, दैट इज कौन कौन सब रही ना। डीपीपी कहले डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, एसएसए कहले सर्वशिक्षा अभियान एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तापर रही इंडिकेटर वाइज पोजिशन इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन, एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड अचीवमेंट फॉर एलिमेंटरी लेवल प्रोग्राम्स NPEGEL एंड KGBV। KGBV कहले कौन ना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तापर नेक्स्ट हूँ प्रोब्लेम एंड इश्यूज इन एलिमेंटरी एजुकेशन। तेणु यही 4टा पार्ट आम कौन पढ़ा ना स्टाटस ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन यूनिट 1। तापर यूनिट 2 रे कौन रही ना स्टाटस ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तादर अच्छी हिस्ट्री ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन ओडिशा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन ओडिशा, देन रोल ऑफ BSc ओडिशा, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, देन स्टाटस ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड रोल ऑफ CHSE, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। CHSE कहले कौन ना काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। देन स्टाटस ऑफ हायर सेकेंडरी वोकेशनल एजुकेशन, इट्स प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। देन यूनिट 3 रे आसला कौन ना स्टाटस ऑफ हायर एजुकेशन। से कौन पढ़ा ना हिस्ट्री ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन, सेकेंडरी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन एट द अंडर ग्रेजुएशन लेवल एंड यूनिवर्सिटी लेवल एंड प्रेजेंट स्टाटस। देन रूसा कहले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, देन ऑटोनोमस कॉलेजेस एंड देयर फंक्शनिंग, एंड देन प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। एटा आम पढ़ा यूनिट 3 रे एतिक पढ़ा। तापर यूनिट 4 रे कौन रही ना यूनिट 4 रही स्टाटस ऑफ टीचर एजुकेशन। प्रथम अच्छे हिस्ट्री ऑफ टीचर एजुकेशन इन ओडिशा, देन प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन फॉर एलिमेंटरी स्कूल टीचर्स, देन नेक्स्ट अच्छी प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, देन रोल ऑफ डाएट, CTE, IASC एंड SCRT, एगुड़ा सब हमें पढ़ा। तापर नेक्स्ट हूँ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन कौन सब प्रॉब्लम्स रही। तापर प्रैक्टिकल कौन रही ना सेमिनार प्रेजेंटेशन, ईच स्टूडेंट हैज टू प्रेजेंट मिनिमम 2 पेपर्स ड्यूरिंग दिस सेमिस्टर रिलेटेड टू थीम्स बेस्ड ऑन कोर 11। ये कोर 11 जो 4टा यूनिट रहा तादर जेकोसी 2टा टॉपिक रे तमें नहीं सेमिनार पेपर प्रेजेंट कर। तापर आसला कोर 12। कोर 12 पेपर ना हूँ इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ए विषय तो तुम बहुत ज्ञान सब रही, मोबाइल चलाऊच, नेट यूज करुच, गूगल सर्च कर सबू करुच। तेणु से विषय ही पाठ पढ़ा ICT, इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। से कौन पढ़ा ना यूनिट 1 रही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तादेर अच्छी मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अप्रोचेस टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स अप्रोच। थर्ड अच्छी इनोवेशंस इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दैट इज OER, MOOC एंड LMS। OER कहले ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC, एंड LMS कहले लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। देन नेक्स्ट अच्छी इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर द टीचर एंड द स्टूडेंट। तापर पिला माने यूनिट 2 रे कौन रही देखा ICT इन एजुकेशन। यूनिट रही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कहले आग जाना इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी कौन, तापर जाना कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन, तापर पढ़ा इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन। तापर रेलिवेंस ऑफ ICT इन एजुकेशन, देन नेचर एंड स्कोप ऑफ ICT इन एजुकेशन, देन कंटेंट पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, then challenges in integrating ICT in education, then use of a computer in education, computer aided learning। then unit 3 रे कौन रही पे
यूनिट 3 रही एप्लिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड आईसीटी असेसमेंट टूल्स इन एजुकेशन जमी आम कोर 5 रे पढ़ा असेसमेंट टूल सब रही सेमती एथरे आईसीटी एप्लिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड आईसीटी असेसमेंट टूल्स इन एजुकेशन कौन कौन रही ना वर्ड प्रोसेसिंग एप्लिकेशन स्प्रेडशीट एप्लिकेशन प्रेजेंटेशन एप्लिकेशन फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट टूल्स रही डिजिटल स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट मैप सॉफ्टवेयर देन असेसमेंट टूल्स रही रूबीस्टार हॉट पोटाटोज एंड ई पोर्टफोलियोज युड़िक आम सब गला यूनिट 3 रे देन लास्ट यूनिट रे कौन रही यूनिट 4 रे कनेक्टिंग विथ द वर्ल्ड कौन रही ना यूज ऑफ ब्राउजर्स एंड सर्च इंजिन्स चूजिंग एप्रोप्रिएट साइट्स सर्च एंड रिट्रीवल ऑफ इनफॉरमेशन एंड रिसोर्सेज डाउनलोडिंग अपलोडिंग एंड शेयरिंग इनफॉरमेशन एंड रिसोर्सेज युवा तो तुमने भल भाव में प्राक्टिस ही कर सारुच डाउनलोड अपलोड करवा शेयर करवा एगुड़ा सब जानिच देन यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेब 2.0 टूल्स ईमेल विकीज सोशल नेटवर्किंग कौन कौन आसना व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक ब्लॉगिंग देन यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ई लाइब्रेरी ई बुक्स एंड ई जर्नल्स एंड इनफ्लिबिनेट तेणु युड़क सब आसला आमर यूनिट 4 रे यार प्रैक्टिकल कौन रही कोर 12 पेपर ना डेवलपमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूजिंग एनी असेसमेंट टूल और डेवलपमेंट ऑफ ए रूब्रिक यूजिंग रूब्रिस्टार जमी असेसमेंट टूल आम जोड़ा रहा सब ताकू यूज करके गोटे ऑब्जेक्टिव टेस्ट करिपरिबो नहले रूब्रिक एवं रूब्रिस्टार मध्य करिपरिबो देन आमर कोर 11-12 सरीगला कोर पेपर तापर आसला डीएससी जहाँ को आम कहे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पिला माने ये जो डीएससी रे रही डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव तार ए रे गोटे पेपर रही बी रे गोटे पेपर रही कहले पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज रही आ गोटे ओडिया लैंग्वेज रही जहाँकि मदर टंग तेणु जी चाहिए इंग्लिश रखिपर और जी चाहिए बीटा रखिपर ओडिया रखिपर जो मैंने इंग्लिश रखा चाहिए से इंग्लिश रखिपारे और जो मैंने ओडिया रखा चाहिए से ओडिया रखिपारे तेणु इंग्लिश सिलेबस कौन रही देख यूनिट 1 रही इंग्लिश इन स्कूल करिकुलम दैट इज लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया विथ रेफरेंस टू एनपी 1986 एंड एनसीएफ 2005 then place of English as a compulsory subject in school curriculum both at elementary and secondary level then learning objectives of learning English as at elementary and secondary levels then English language skills components there are independence and interdependence ये आसला आमर यूनिट 1 रे जो माने इंग्लिश मेथड रखिबो तापर यूनिट 2 रे होची अप्रोचेस मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग इंग्लिश एथिरे आसी कोन ना प्रथम आसला अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज that is bilingual method, translation method, direct method, structural approach and a communicative approach. Then learning skill है task for developing listening comprehension. Third है speaking skill कहले task for developing speaking skills. Then reading skill है types of reading strategies to develop reading comprehension. Then writing skill कौन इन्वॉल्व कर strategies to improve writing skill, qualities of good writing, simplicity, logicality and organization in writing. Then unit 3 रे आसुची कोन ना transaction of contents. First point होची teaching of prose, detailed and non-detailed, poetry, grammar and composition, its approaches, methods and strategies. कहले आमर डिटेल एवं नॉन डिटेल्ड कहले पोएट्री ग्रामर एवं कंपोजिशन अप्रोचेस कौन रही मेथड्स एवं स्ट्राटेजीज सब कौन कौन रही देन पेडागोजिक एनालिसिस कहले कंटेंट एनालिसिस ऑफ टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स न्यू वोकाबुलरी स्ट्रक्चरल वर्ड्स ग्रामर कंपोनेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इंक्लूडिंग आईसीटी मटेरियल्स कहले इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मटेरियल्स देन नेक्स्ट होची प्रिपेयरिंग लेसन प्लान फॉलोइंग 5E एंड इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल जहाँ को आम कहे आइकन डिजाइन मॉडल देन प्रिपेरेसन ऑफ लेसन प्लान्स फॉलोइंग हर्बटरियन अप्रोच हर्बटर जो 5 स्टेप्स रही से अप्रोच रे लेसन प्लान प्रिपेयर कराबो देन नेक्स्ट यूनिट होची यूनिट 4 लेसन डिलीवरी स्ट्रेटजीज एंड असेसमेंट फर्स्ट अच्छे लेसन डिलीवरी स्ट्रेटजीज लेक्चरिंग रोल प्ले एंड ड्रामाटाइजेशन कोलाबोरेटिव अप्रोच एबिलिटी ग्रुपिंग ग्रुप वर्क लर्निंग थ्रू नैरेटिव एंड डिस्कोर्सेस कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग देन अच्छी टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट इन इंग्लिश कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस इन इंग्लिश प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट आइटम्स एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स टाइप एंड रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस जो आम रही तापर तार प्रैक्टिकल रोज ना स्कूल इंटर्नशिप कहले डेलीवरी ऑफ 5 लेसन्स
फॉलोइंग हर्बटोरियन 5E और आइकन डिजाइन मॉडल। तेणु 5टा लेसन लिखापी पड़ो हर्बटोरियन स्टेप्स हो 5E मॉडल हो आइकन डिजाइन मॉडल हो। तापर पिला माने देखिबा हमर जो रही डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर 1 रो आमर पार्ट 2टा रही पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज ओडिया। जो मैंने इंग्लिश चाहिए रखिपर जो मैंने ओडिया चाहिए से ओडिया रखिपारे। तेणु ओडियार यूनिट 1 रही कौन ना ओडिया एज मदर टंग इन स्कूल करिकुलम। जेहेतु आमर ओडिया हूँ मदर टंग तेणु स्कूल करिकुलम ओडियाटा कौ भाई भाव में मदर टंग भाव में किभली कार्य करुचे। तादेह अच्छी इंपोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन द लाइफ एंड एजुकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, प्लेस ऑफ ओडिया एज मदर टंग इन स्कूल करिकुलम इन ओडिशा बोथ एट एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी लेवल्स in the context of a language policy recommended by NP 1986 3 language formula NCF 2005 ए NP 1986 एवं NCF 2005 रे हम पढ़िबा। नेक्स्ट होची लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग ओडिया एट एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी लेवल्स, देन इंटरडिपेंडेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स इन ओडिया एंड स्ट्रेटजीज फॉर फैसिलिटेटिंग एक्विजिशन ऑफ 4-fold लैंग्वेज स्किल्स इन ओडिया। देन यूनिट 2 रे कोन पढ़िबो ना पेडागोजिक अप्रोचेस टू टीचिंग लर्निंग ओडिया। प्रथम होची साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन विथ रेफरेंस टू ओडिया एज मदर टंग, देन प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ ओडिया लैंग्वेज इन मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट, देन ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग ओडिया, देन डिफरेंट अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज टू द टीचिंग लर्निंग ऑफ ओडिया प्रोज डिटेल्ड एंड नॉन डिटेल्ड, ओडिया पोएट्री, ओडिया कंपोजिशन एंड ओडिया ग्रामर कौन कौन मेथड द्वारा सब पढ़ा जीवो एगुड़िक। देन यूनिट 3 हूँ करिकुलर एक्टिविटीज इन ओडिया। कौन प्रथम रोचे पेडागोजिक एनालिसिस, देन कंटेंट एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ टॉपिक्स ऑफ ओडिया टेक्स्ट बुक फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स, न्यू वोकाबुलरी, स्ट्रक्चरल वर्ड्स, ग्रामर कंपोनेंट्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। देन नेक्स्ट हूँ मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इंक्लूडिंग आईसीटी मटेरियल्स, असेसमेंट स्ट्रेटजीज, देन प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स फॉलोइंग हर्बटोरियन 5E एंड आइकन डिजाइन मॉडल। तापर यूनिट 4 रे आसुची कौन कौन रही ना यूनिट 4 हूँ आमर आसेसमेंट। यूनिट 4 है आसेसमेंट कौन कौन रही ना टाइप्स ऑफ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट एंड एक्सटर्नल असेसमेंट, देन टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट इन ओडिया, continuous assessment of learners performance in ओडिया, preparation of different types of objective based test items, extended response type and restricted response type and objective type, preparation of a checklist, rating scale and rubric, portfolio and assessment in portfolio assessment in ओडिया। तेणु एगुड़ा सब गला हमारा असेसमेंट टूल्स। देन प्रैक्टिकल कौन रही ना स्कूल इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल रही स्कूल इंटर्नशिप डिलीवरी ऑफ 5 लेसन फॉलोइंग हर्बटोरियन 5E और आइकन डिजाइन मॉडल। तेणु एगुड़िक हूँ तुम DSC 1 एवं DSC 2 सॉरी DSC 1 रो टॉपिक जी इंग्लिश चाहिए रखिपर और जी ओडिया चाहिए से रखिपर। तापर DSC कहले डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर 2 DSC 1 पढ़ा और DSC 2 पढ़ा। DSC 2 रे सेमती रही दुईटा पेपर, गोटे हूँ पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस जी चाहिए से सोशल साइंस पढ़ो, आउ गोटे रही पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। तेणु जी एटा को चाहिए पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस पढ़ी पार और बी रे जी चाहिए पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ी पार। सोशल साइंस कौन रही यूनिट 1 रे कौन सब रही कॉन्सेप्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेस। तादेह मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंसेस आज NCF 2005। सेकेंड रोचे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी लेवल्स। थर्ड रही इंपोर्टेंस ऑफ टीचिंग सोशल साइंस इन स्कूल एजुकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैल्यूज कॉम्पिटेंसीज स्किल्स टू बी डेवलप्ड थ्रू सोशल साइंसेस। देन यूनिट 2 रे आसला कौन ना मेथड्स एंड अप्रोचेस टू टीचिंग लर्निंग सोशल साइंस। कौन कौन सब मेथड्स रही स्टोरी टेलिंग मेथड, नरेशन कम डिस्कशन मेथड, ड्रामाटाइजेशन मेथड, सोर्स मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, फील्ड ट्रिप्स एंड ऑब्जर्वेशन, यही मेथड गुड़िक सब आम पढ़ा। तापर नेक्स्ट हूँ यूनिट 3 रोचे करिकुलर एक्टिविटीज इन सोशल साइंसेस। कौन रही ना पेडागोजिक एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ टॉपिक्स ऑफ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, then रही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, then मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज, then teaching learning materials including ICT materials, then learning activities including student and teacher activities, then assessment strategies and then preparing lesson plan following Herbert 5E and icon design model। तेणु एगुटिक रोचे हर्बटोरियन स्टेप 5E मॉडल एंड
आइकन डिजाइन मॉडल जहाँकि तुम पढ़ीच कोर 4 रे पढ़ीच। देन नेक्स्ट हूँ यूनिट 4 डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स मटेरियल्स एंड असेसमेंट इन सोशल साइंस। प्रथम हूँ कौन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कौन सब रही ना मैप्स आटलास ग्लोब्स चार्ट्स ग्राफ्स मॉडल्स फिल्म स्ट्रिप्स टीवी वीडियो ओएचपी कहले ओवरहेड प्रोजेक्टर एंड कंप्यूटर। देन टाइम लाइन कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट्स टाइप एंड यूज। देन टाइप्स ऑफ असेसमेंट कहले सेल्फ असेसमेंट पीयर असेसमेंट टीचर असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट एंड एक्सटर्नल असेसमेंट। Then techniques of assessment in history of political science, continuous assessment of learner performance in history and political science, preparation of different types of objectives based test. Then items कहले extended response type and restricted response type and objective type. तेणु एगुड़िक आसला डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स मटेरियल एंड असेसमेंट टूल्स। देन प्रैक्टिकल कौन रही ना स्कूल इंटर्नशिप सेमती रही डेलीवरी ऑफ 5 लेसन्स फॉलोइंग ऑर्बिटरी 5 एंड आइकन डिजाइन मॉडल। देन नेक्स्ट हूँ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर 2 जहाँकि आम रही पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। तार यूनिट 1 ने कौन रही ना फाउंडेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन एजुकेशन ता भितर आसूँ नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग मैथमेटिक्स इट्स इंपोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एट एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी लेवल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स एट द 2 लेवल्स कहले एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी लेवल्स। देन करिकुलम रिफॉर्म्स इन स्कूल मैथमेटिक्स rationale learning objectives principles designs and materials in mathematics recent curricular reforms at the national and state levels NCF 2005। then unit 2 रे आसी methods of teaching learning mathematics कौन सब methods रही। प्रथम हूँ learning by discovery nature and purpose of learning by discovery guided discovery strategies in teaching mathematical concepts। then teaching for understanding proof by induction and deduction प्रूफ बाय एनालिसिस एंड सिंथेसिस मैथमेटिक्स पढ़ाई दुईटा मुख्य मेथड हो ना इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड और एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स इंपोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स। देन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस दैट इज सेल्फ लर्निंग एंड पीयर लर्निंग स्ट्रेटेजीज कोलाबोरेटिव स्ट्रेटेजीज एंड 5E एंड आइकन डिजाइन मॉडल। देन यूनिट 3 रे आसूँ करिकुलर एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स कौन रही ना पेडागोजिक एनालिसिस कंटेंट एनालिसिस एनालिसिस ऑफ टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज देन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इंक्लूडिंग ICT मटेरियल्स देन लर्निंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग स्टूडेंट एंड टीचर एक्टिविटीज देन असेसमेंट स्ट्रेटेजी एंड देन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग लेसन प्लान फॉलोइंग ऑर्बिटरी 5E एंड आइकन डिजाइन मॉडल से आइकन डिजाइन मॉडल आ तीन जाक मॉडल आम यूज करवा। देन नेक्स्ट हूँ यूनिट 4 असेसमेंट इन मैथमेटिक्स कौन रही असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग यूनिट टेस्ट डिजाइनिंग ब्लूप्रिंट आइटम कंस्ट्रक्शन मार्किंग स्कीम्स। देन असेसमेंट फॉर मैथमेटिक्स लर्निंग असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियोज इन मैथमेटिक्स ग्रुप एंड कोलाबोरेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। देन नॉन टेस्टिंग मेथड्स ऑफ असेसमेंट और mathematics learning observation of learners in action rating of participation in various mathematics tasks and activities। then diagnosis of difficulties in learning mathematics concepts remediation of the difficulties enrichment programs in mathematics learnings national mathematics talent search mathematics olympiad। then planning for continuous assessment of classroom learning in mathematics एगुड़ाक रहा यूनिट 4 रे आम पढ़ा। देन नेक्स्ट हूँ प्रैक्टिकल कौन रही ना सेमती 5 लेसन्स डेलीवर करने पड़ो जहाँकि ऑर्बिटरी 5E और आइकन डिजाइन मॉडल मध्य जो गोटा को आम फॉलो कर तेणु युड़िक तुम मानकर हूँ ऑनर्स रे आम पढ़ा कोर 11 12 और DSC 1 और DSC 2 DSC 1 रू आम जी चाहिए इंग्लीश पढ़ी पार जी चाहिए इंग्लीश ओडिया रखिपर और DSC 2 रू जी चाहिए मैथमेटिक्स रखिपर जी चाहिए सोशल साइंस रखिपर। यही बहुत इनफॉर्मेटिव वीडियो पाइबापे वीडियो को लाइक कर कमेंट दब शेयर कर सब्सक्राइब करने को केबे भी भूलबनी। थैंक यू ऑल।